Hello everyone. So today we are starting with class 11th from NCERT book, chapter 1st, sets, exercise 1.1, question number 1. So first question here, which of followings are sets? नीचे तो ये all lines ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ set ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ set ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Now as you guys know, set is something which is well defined, well distinguishable. So what does well defined means? Something जिस ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ. ਇੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ everyone is going to give same answer. That is set. अगर कुछ फीलिंग बेस्ड इमोशन बेस्ड होंदा जे समथिंग जिस दा आंसर वेरी कर रहा पर्सन टू पर्सन वो सेट नहीं होंदा. दैट इज नॉट वेल डिफाइंड. तो जो भी वेल डिफाइंड होंदा वेल डिस्टिंग्विशेबल तो फॉर श्योर होंदा ही होंदा. सो फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. नाउ थिंक एक ईयर दे विच 12 मंथ्स होंदे आ एंड देयर आर मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर जे आर जनवरी, then June, then July. Anything else? Only 3. Jan, June, July. That will fix up. मैं किसी ने भी जाके पूछा, he will saying January, June, July. So that means unique, well defined answer. किते भी vary नहीं करना. So it is a set. So I'm marking right or wrong. Yes, it is a set. Second, collection of 10 most talented writers of India. Now think, most talented, it's a emotion, it's a feeling. मैनू कोई राइटर अच्छा लगता होगा, किसी ने कोई राइटर लाइक जिवें मैथ्स दे विच किसी नूं NCERT बुक अच्छी लगती हो, किसी नूं JP महेंद्र मॉडर्न, किसी नूं RD शर्मा, किसी नूं एनी अदर. ठीक है. That means everyone has their own perception, everyone has their own mind. ठीक है. किसी लिए कोई टैलेंटेड है, किसी लिए कोई टैलेंटेड है. सो इट्स अ फीलिंग बेस्ड क्वेश्चन. मैं एक तो जाके पूछूंगा आंसर माइट बी सेइंग मुंशी प्रेमचंद, सेकंड इज सेइंग समवन एल्स, थर्ड इज सेइंग समवन एल्स. दैट मीन्स इट्स अ नॉट वेल डिफाइंड. दैट मीन्स इट्स नॉट अ सेट. थर्ड, a team of 11 best cricket batsmen of the world. Just check it out. A team of 11, number is fixed, but best. It's an emotion, again a feeling. That means best की होंदागा मेरे लिए बेस्ट कुछ हो रहा, तो लिए बेस्ट कुछ हो रहा. If I'm saying who is the best player of India, I will say Sachin Tendulkar. Someone says Sehwag, third one says Yuvraj, fourth one says Dhoni. Everyone has their own perception. World तो यहाँ कोई AB de Villiers को होगा, कोई Peterson को होगा, कोई कुछ को होगा. That means it's again depending on everyone's feeling. ठीक है. So answer is not going to be fixed. क्योंकि मैं कहूँगा 11 best तो everyone has their own perception. सो अगेन इट्स नॉट अ सेट क्योंकि ये कोई भी वेल डिफाइंड 11 प्लेयर्स नहीं आ सकते. कोई कहूगा पीटरसन रखना, कोई कहूगा AB de Villiers रखना का, कोई कहूगा क्रिश गेल रखना का, कोई कहूगा सचिन तेंदुलकर रखना. एंड एवरीवन हैज देयर ओन. ठीक है. फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. नाउ योर क्लास इज वेल डिफाइंड. लेट्स से देयर आर 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 10 आर बॉयज, 20 आर गर्ल्स. ठीक है. फिक्स्ड है. ਹੁਣ 10 ਬॉयਜ਼ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ. ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਕ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ 10 ਬॉयਜ਼ ਹੋਣਗੇ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ 10 ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ. ਉਹ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਬॉयਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬॉय ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. ਦੈਟ ਮੀਨ ਦ ਕਲਾਸ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਕਲਾਸ ਆਰ ਫਿਕਸਡ. ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬॉय ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰਲ ਆ. They are fixed one, unique. मैं किसी भी बच्चे तो आंसर पूछा, he is going to say these are the boys which are of our class. आप डिस्टिंग्विश भी easily कर सकते हैं. 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ we can identify. ठीक है. So it is having a perfect answer, a unique, well defined answer. So it is a set. Next, fifth one, the collection of all natural numbers less than 100. Now natural number ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? Numbers starting from 1 without fractions. 1 2 3 4 5 6 7 8. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ 100 ਤੋਂ ਲੈਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ एवरीवन इज गोइंग टू सेम 1 2 3 4 5 6 7 up to 99. कोई ये तो नहीं कहूँगा 10 सॉरी -10. एवरीवन नोज इट्स दैट्स नॉट अ नेचुरल नंबर. नो वन कैन से 0, नो वन कैन से 1.1. सो अगेन इट इज़ अ वेल डिफाइंड थिंग. मैं इतने पूछा, मैं इंडिया तो बाहर पूछा, मैं कितने भी जाके पूछा, आंसर इज गोइंग टू सेम.
So it's a set. A collection of novels written by Munshi Premchand. ਹੁਣ क्वेश्चन जो वर्क देखो इस दे च ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ most talented. Now I'm saying novels written by Munshi Premchand. It is again fixed. अगर मैं कहा this writer have written 20 of books या 100 of books, ठीक है, तब मैनू पता the whole 100 are well defined. अगर मैंने कितने भी बुक रखी होगी I can distinguish that. अगर किसी ने पूरी बुक्स लिस्ट का पता गा he can immediately say that this book is written by Munshi Premchand. It is well defined. चाहे किसी ने 10 बुक्स लिखे ने, चाहे किसी ने 15 लिखे ने, it is well defined. जिन्होंने easily distinguish भी कर सकते हैं तो defined है बुक पे या I can say it is written by Munshi Premchand. ये तो नहीं है कि जेपी मोहिंद्र ने कोई कहूँगा भी मुंशी प्रेमचंद है, not at all. It's again a well defined answer. So it is a set. The collection of all even integers, again a set. Even integers 2, 4, 0, 6, 8, 10, 12 and all and all and all. Is that clear or not? So again fix one answer which is same for all, not a feeling based answer. So it is a set. The collection of questions in the chapter. Obviously, तुसी जेड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट्स से ये 6 क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हो ये 6 क्वेश्चन है. हुन किसी ने भी जाके पूछो NCERT दी 1.1 एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन एवरीवन इज गोइंग टू say same 6. अगर ये फर्स्ट है तो एवरीवन इज गोइंग टू से इट इज फर्स्ट. ये तो नहीं कोई आगे कहेगा थर्ड है क्योंकि बुक तो प्रिंटेड है. सो अगेन इट्स अ वेल डिफाइंड आंसर. कलेक्शन इन द बुक इज वेल डिफाइंड. दैट मीन्स अगेन अ सेट. बट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स. नाउ मोस्ट डेंजरस अगेन अ फीलिंग. मेरे लिए ओके फॉर यू गाइस हु इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल. जे सोचो ना तो हो सकता कोई लायन कह रहा होगे, हो सकता कोई स्नेक कह रहा हो सकता कोई डायनासोर कह रहा हो सकता कोई एलिफेंट कह रहा हो सकता एक कॉकरोच भी डर लगता हो. सो अगेन इट वेरीज. अगर मैं कहूँ स्नेक इज द मोस्ट डेंजर, आर यू एग्री? नॉट एट ऑल. समवन इज सेइंग लायन इज मोर डेंजरस, समवन सेइंग डायनासोर इज मोर डेंजरस. सो इट्स अ फीलिंग बेस्ड आंसर and feeling based answers are not well defined, so it is not a set. So is that clear? Sets are something which are well defined. Well defined मतलब किससे तो भी जाके मैं पूछा आंसर is going to be same. So first one is set, second one is not a set क्योंकि feeling based है. Third is again not a set. Fourth one is set. Fifth is set. Sixth is set. Seventh is, eighth, ninth one is again not a set. Okay, hopefully clear hoga. In case of any doubt, you guys can ask me. My number is there in the description. Okay, thank you.